हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। आज हम इंग्लिश क्लास 8th का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। Before you read, there are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remember them. The story you will read mentions one such date and event, a war between the British and the Germans in the 1914. Can you guess which war it was? यहाँ पे हम एक स्टोरी पढ़ रहे हैं जिसका नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे अच्छा क्रिसमस प्रेजेंट। अगर हम बिफोर यू रीड, इससे पहले कि हम इसे स्टार्ट करें, यहाँ कुछ डेट्स दे रखी हैं, पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है जो हिस्ट्री में बहुत सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट का मतलब इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं जिसके बारे में सब लोग याद रखते हैं, जानना चाहिए उन्हें। और ये स्टोरी जो है ये वॉर की है, जर्मन्स और इंग्लैंड के बीच में वॉर हो रही है। और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम का जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम है, जो उस समय की ये स्टोरी है। आई स्पॉटेड in a junk shop in Bridport, a roll-top decks. The man said it was early 19th century and oak. I had wanted one, but they were far too expensive. This one was in a bad condition, the roll-top in several pieces, one leg clumsily mended, scratch marks all down one side. It was going for very little money. I thought I could restore it. It would be a risk, a challenge, but I had have it. I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. I began work on it on Christmas Eve. I removed the roll top completely and pulled out the drawer. The winner had lifted almost everywhere. इट अब यहाँ पे जो एक स्टोरी बता रहा है कि मुझे एक जंक शॉप से क्या लेना था, रोल टॉप लेना था। जैसे आपको मैं यहाँ स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, ये है रोल टॉप डेस्क। इसमें आप लेटर लिख सकते हो और साइड में कुछ ड्रॉर्स वगैरह होती हैं। ये पुराने टाइम में बहुत फैशन में था। अब यहाँ पे क्या है कि ये पर्सन लेकर आता है, लेकिन जो सामान वो लेकर आता है उसकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही होती क्योंकि ये बहुत महंगा होता है। फाइनली उसे एक पसंद आता है जो कि उसके बजट में था और वो उसे ले लेता है, लेकिन वो देखता है कि वो बहुत डैमेज है। उसका जो विनर है, ऊपर से जो सनमाइका टाइप लगाया जाता है, वो सब झड़ गया, उसका नीचे गिर गया है, टूटी फूटी हालत में है। लेकिन उसको अपने पे कॉन्फिडेंस है कि वो इसको ठीक कर लेगा, रीस्टोर कर लेगा। और वो अपने गैराज में ले जाके उसको साफ सूफ करता है। और वहाँ वो क्या देखता है, looked like water damage to me. Both fire and water had clearly taken their toll on this decks. The last drawer was stuck fast. I tried all I could to ease it out gently. In the end, I used but force and I struck it sharply with the side of my fist, and the drawer flew open to reveal a shallow space under a secret drawer. There was something in there. I reached in and took out a small black tin box, shallow taped to the top of it was a piece of lined notepaper, and written on it in shaky handwriting, Jim's last letter, received January 25th, 1915, to be buried with me when the time comes. I knew as I did it that was wrong of me to open the box, but curiosity got the better of my scalps. It usually does. Inside the box there was an envelope. The address read Mrs. Jin Macpherson, 12 Cooper Beach, Brightport, Dorset. I took out the letter and unfolded it. It was written in pencil and dated at the top, December 26th, 1914.
जो ये लेकर आया था ड्रॉर वो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में था। स्टार्टिंग के तो 2 खुल गए, लेकिन लास्ट वाले में उसको थोड़ा फोर्स लगाना पड़ा, उससे झटका झुटका दे के उसे खोला तो उसके अंदर एक सीक्रेट बॉक्स निकला जिसके अंदर एक टिन का बॉक्स था। और उस टिन बॉक्स के ऊपर शेकी हैंड राइटिंग में लिखा था। शेकिंग का मतलब जैसे किसी ने कांपते हुए हाथों से लिखा हो कि ये जिम का लास्ट लेटर है और इसे मेरे साथ ही दफना दिया जाए, बरिड कर दिया जाए, मतलब मेरे साथ ही इसको ख़त्म कर दिया जाए जब भी वह समय आए। मतलब अभी तो वो लाइव है, जब मरेगी तो उस समय उसके साथ ही इसको दफना दिया जाए, क्योंकि ये जिम का यानी उसके हस्बैंड का लास्ट लेटर है। अब उसने क्या किया कि जब उसने उसको खोल के देखा, उसके अंदर जो लेटर था उसमें डेट डाल रखी थी 26 दिसंबर 1914 की। तो आप देखते हैं लेटर में क्या लिखा है। डियरेस्ट कोनी, आई राइट टू यू in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. We were all standing to the two in our trenches yesterday morning, Christmas morning. It was crisp and quiet all about, as beautiful a morning as I have ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be. तो आज मैं तुम्हें एक अच्छी सी बात बता रहा हूँ जो कि मतलब मुझे बड़ा वैसा लग रहा है कि मुझे बताना चाहिए कि आज कल जो है क्रिसमस मॉर्निंग के दिन हम लोग सुबह उठे और बाहर निकले तो बहुत ही ठंडा था, जैसा कि क्रिसमस मॉर्निंग होता है। I should like to be able to tell you that we began it, but the truth I'm ashamed to say it's Fritz began. First, someone saw a white flag waving from the trenches opposite. Then, they were calling out to us from across no man's land, "Happy Christmas, Tommy! Happy Christmas." When we had got over the surprise, some of the shouted back, "Same to you, Fritz. Same to you." I thought that would be that we all did. But then suddenly one of them was up there in his grey great coat and waving a white flag. "Don't shoot, lads," someone shouted, and no one did. Then there was another Fritz up on the parapet, and another, "Keep your heads down." I told the man it's a trick, but it was not. अब क्या हुआ कि उन्होंने बोलना शुरू किया सामने वाले की तरफ से कि सामने कुछ भी कोई हरकत नहीं हो रही थी, तो उसको घबराहट भी हो रही थी कि क्या हो रहा है। और ये करके फर्स्ट टाइम उसने देखा कि सफ़ेद झंडे लहरा रहे हैं ट्रेंचेस से अपोजिट डायरेक्शन से, और वहाँ से लोग बाहर निकल रहे हैं और वो उनको हैप्पी क्रिसमस विश कर रहे हैं। टॉमी ब्रिटिश सोल्जर्स को कहते हैं और फ्रिट्ज जो हैं वो जर्मन सोल्जर्स को कहते हैं। तो ये मतलब निकनेम है, एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए कह लीजिए या वैसे, तो वो वहाँ सामने से उनको कहते हैं। तो और ये यहाँ से सेम टू यू कहते हैं। लेकिन ये पर्सन जो है ये अपने उसमें ऑफिसर होता है, तो उसे लगता है कहीं कोई ट्रैप ना हो मेरे सोल्जर्स को ये लोग फंसाने के लिए, तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो वो उनको बोलता है, सामने से बोलते हैं कि भाई शूट मत करना, और वाइट फ्लैग वो करते हैं। और कोई चिल्ला रहा है वहाँ से कि कोई नहीं करेगा, कोई शूट नहीं करेगा। वो अपनी तरफ से भी मना कर रहा है, सामने वालों को भी मना कर रहा है, और आ रहे हैं निकल के। और फिर उसके बाद में वो अपने दोस्त उसको कहता है, मतलब जो ये अंग्रेज है ये अपने साइड के लोगों को कहता है कि अपने हेड डाउन कर लो, ये हो सकता है ये ट्रिक हो। मगर वो एक ट्रिक नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन वाज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड। एक जर्मन ने क्या किया, बॉटल को ऐसे वेव किया, हिलाया। "It's a Christmas day, Tommy. We have snapped. We have sausages. We meet you, yes, by this time there." तो अब वो क्या कह रहा है कि हमारे पास में शराब है और खाने के लिए सामान है, तो हम वहाँ पे मिलेंगे, वहाँ आ जाओ। और अब वो देखता है कि एक के बाद एक बहुत सारे जर्मन्स जो हैं आ रहे हैं अपने हाथों में कुछ सामान लेके, सफ़ेद झंडे लहराते हुए। "Dozens of walking towards us." बहुत सारे हमारी तरफ आ रहे हैं, नो मैंस लैंड में आ गए। "एंड नॉट अ राइफल बिटवीन." अब हमारे बीच में क्या है, बंदूक नहीं है। "लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट अप." अब क्या है, ये कुछ प्राइवेट मोमेंट हम लोग वो कर रहे हैं। "कम ऑन बॉयज़, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर?" आ जाओ
और अपने और सिपाहियों को बुलाया कि हम किस लिए इंतज़ार कर रहे हैं। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग दैम, अब कोई उन्हें रोक नहीं सकता था। आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था, तो मैं उन्हें रोकना चाहता था तो रोका उन्हें। फिर उसके बाद क्या हुआ, आई सपोज, बट द ट्रूथ इज़ दैट इट नेवर इवन अकर टू मी आई शुड, ऑल along their line and ours I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats meeting in the middle, and I was one of them. I was part of this. In the middle of the war we were मेकिंग पीस। अब वो क्या कह रहा है कि ना सामने से भी लोगों ने लाइन लगा ली, ग्रे कोट में जो थे और खाकी कोट वाले, यानी हम लोगों ने भी लाइन लगा ली और एक दूसरे से मिडिल ऑफ वार मिले। और यहाँ पे हमने क्या बना रखी है, शांति के बीच में हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं। यू कैन नॉट इमेजिन, आप इस बात की कल्पना नहीं कर सकते डियरेस्ट कोनी, माई फीलिंग्स एज आई लुकड इन टू द आइज ऑफ द फ्रिट्स ऑफिसर who approached me, hand outstretched, hands Wolf, he said, gripping my hand warmly and holding it. I am from Dorseldorf. I play the cello in the orchestra. Happy Christmas. अब उसने क्या किया, जो सामने वाला ऑफिसर था उसने उसका हाथ अपने हाथ में लिया, शेक हैंड जैसे करते हैं, और उसको बताया कि मेरा नाम डॉस्टच है और मैं क्या करता था कि ऑर्केस्ट्रा में प्ले करता था सेलो। सेलो होता है एक वायलिन टाइप का, वो जैसे आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हैं। कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। I am a school teacher from Dorset in the west of the England. Oh, Dorset, he smiled. I knew this place, I knew very well. We shared my rum ration and his excellent sausages, and we talked. Coney, how we talked. He spoke almost perfect English, but it turned out that he had never set foot in Dorset, never even been to England. He had learned all he knew of England from school and from reading books in English. His favorite writer was Thomas Hardy. His favorite book, Far from the Madding Crowd. So out there is no man's land. We talked of Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Troy and Dorset. He had a wife and one son, born just 6 months ago. As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere, all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating, hands full, and I shared what was left of your wonderful Christmas cake, Coney. He thought the marzipan was the best he had ever tasted. I agree. We agreed about everything, and he was my enemy. There never was a Christmas party like it, Coney. Then someone I do not know who brought out a football. Great coat were dumped in piles to make goalpost, and the next thing we knew, it was Tommy against Fritz out in the middle of no man's land. Hans Wolf and I looked on, the cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us. He saw it too and smiled. Jim Macpherson, he said after a while, I think this is how we should resolve this war. A football match. No one dies in a football match. No children are orphaned. No wives become widow. I had prefer cricket, I told him. Then we Tommies could be sure of winning probably. We laughed at, and together we watched the game, sad to say. यहाँ वो अपनी वाइफ को बता रहे कि कोनी,
हम लोग हर बात पे एग्री कर रहे थे, जबकि वो क्या था, दुश्मन था मेरा। हम कैसे बिहेव कर रहे थे, बहुत अच्छे दोस्तों की तरह से बिहेव कर रहे थे। फिर किसी ने फुटबॉल ला के रख दी वहाँ पे, और एक फुटबॉल मैच की बात होने लगी। तो हमने कहा, मतलब टॉमीज़ ने कहा कि हम अच्छे हैं किस में, क्रिकेट में अच्छे हैं। तो सामने वाला हंसने लगा, उसने बोला कि नहीं, फुटबॉल मैच से डिसाइड करते हैं वॉर का डिसीजन। इस मैच में कोई नहीं मरेगा, ना कोई बच्चा अनाथ होगा, और ना किसी की वाइफ जो है वो विडो होगी। और अब दोनों के दोनों हंसने लगे, और गेम जो है वो खेला जाने लगा। किस चीज़ का? फुटबॉल का। Connie Fitz won 2-1, but as Hans Wolf generally said, our goal was wider than theirs, so it was not quite fair. The time came, and all too soon, when the game was finished, the snaps and the rum and the sausages had long since run out, and we knew it was all over. I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon, that the fighting would end and we could all go home. I think that is what every soldier wants on both sides, Hans Wolf said. Take care, Jim Macpherson. I shall never forget this moment, nor you. He saluted and walked away from me slowly. Unwillingly, I felt he turned to wave just once, and then became one of the hundreds of grey-coated men drifted back towards their trenches. The night back in our dugouts, we heard them singing a carol, and singing it quite beautifully. It was silent night. Our boys gave them a rousing chorus of while Shepherd watched. We exchanged carols for a while, and then we all fell silent. We had had our time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live. अब यहाँ वो ये बता रहा है कि हम दोनों साइड के सोल्जर्स ये चाहते हैं कि ये लड़ाई ख़त्म हो जाए और हम वापस अपने घरों को लौट जाएं, अपनी फैमिलीज़ के पास उनसे मिलें जाके। और इसी तरह की हर व्यक्ति जो हर सोल्जर है वो यही उम्मीद कर रहा है। वो लोग अपने बैरक में लौट गए। उसने जो उनका वॉल्फ जो था उसने मुड़ के पीछे देखा, हाथ हिलाया, और वो अपने स्माइल करता हुआ अपने बैरक में चला गया। वो लोग अपने बैरकों में जाके कैरल, क्रिसमस कैरल गा रहे हैं, जिसको ये लोग भी रिपीट कर रहे हैं। यहाँ से साइलेंस है, और सबके मन में एक मतलब बहुत अच्छा मोमेंट, उन्होंने वॉर के बीच में पीस के साथ में एक त्यौहार मनाया उन लोगों के साथ में जो सो कॉल्ड उनके दुश्मन थे। लेकिन आज के दिन वो वैसे ही मिले, उनके सारे इमोशंस वैसे ही थे जैसे हम लोगों के हैं। कि ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि ये एक बहुत अच्छा मोमेंट है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो जर्मन हो या इंग्लिश हो, कोई भी जो आम आदमी, कॉमन पर्सन है, वो वॉर नहीं चाहता। वो अपनी फैमिलीज़ के साथ रहना चाहता है और जल्द से जल्द उनसे मिलना चाहता है। तो यहाँ पे ये फिर बोलता है, डियरेस्ट कॉनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी. I know from all that happened today how much both armies long for peace. We shall be together again soon, I'm sure of it. योर लविंग जिम. अब जिम ने उसको बोला कि मैंने जो आज मोमेंट वो किया एक तरह से खजाने की तरह है, एक ट्रेजर पाया हमने, और उम्मीद करते हैं कि हम दोनों आर्मीज़ जो हैं वो बहुत जल्दी अपने अपने शांति वाली लाइफ को जिएंगे। और उसके बाद में उसने उसको अपनी वाइफ को लविंग वाइफ करके मतलब ब्लेस किया, प्यार दिया। और उसने ये बोला कि ये जो लड़ाई चल रही है ना, ये बस इसी साल है, अगले क्रिसमस तक ऐसा होगा कि ये वॉर ख़त्म हो जाएगी और मैं वापस अपने घर में होऊंगा। तब ये एक बुरी याद की तरह से होगी। लेकिन ये लेटर जो है ये जिम का आखिरी लेटर था।
जो कि उस ड्रॉअर के साथ उस व्यक्ति के पास पहुंच गया जो उसे अभी पढ़ रहा है। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम ये जानेंगे कि उस व्यक्ति ने क्या किया, क्या वो लेटर उसने वापस किया कोनी को, और कोनी ने उस लेटर को पाकर कैसे रिएक्ट किया। इसके लिए सेकंड पार्ट जल्दी ही आपको मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।